है ना? So is my screen visible? Yeah, Yeah. it is. Yeah. So I told you that there's this man who is holding a balloon in his hand. अच्छा, अब जाहिर है ये जो balloon इसने hold किया हुआ है, I'll just redraw एक string है इस balloon की. ठीक है? That is tied just like this. Okay. अब ये balloon, it's at this position. It's not moving up. It's not coming down. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस balloon पर forces balanced हैं. What is present inside the balloon? Helium gas. Helium. All right. So he is holding this balloon with the help of a string. So that means there's a tension force in the string, and that's acting downward. A tension force acting downward. Air is pushing up. Air is pushing up. The man is pulling the balloon down. The air, the helium gas, is pushing it up. The two forces are balanced. The two forces are balanced. So it's not moving. It is at rest. And once again, if you look at the man, definitely he has some weight which is acting vertically down. Yes or no? Yeah. But he's Yeah. not sinking into the ground. Hmm? ये ground में धंस नहीं रहा. He's not sinking into the ground. Can someone tell me why is that so? हानिया आप मुझे बता सकती हैं? जैनब, लिंता, अब्दुल्ला. Up thrust force. Because Sorry, of sorry. the हाँ, दोबारा बोलो. Let it be wrong. कोई मसला नहीं है. No, actually, so I saw the wrong diagram for some Okay. reason. So. Okay, कोई बात नहीं. चलो तो अब बताओ. Why this man is not sinking into the ground? because is it because like the both forces are like equal? Is that it? Which two forces? The gravitational force. And there's a normal contact force that is from the ground. ये देखो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है ये फोर्स. ये फोर्स ग्राउंड से, जहां इसकी फीट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में ना, वहां से एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो रहा है. So the upward force, the contact force from the ground is equivalent to the weight acting downward. तो इसलिए ये balanced है. ये rest पे है. ये move नहीं कर रहा. The body remains at rest. इन सारी situations में न्यूटन्स की first law obey हो रही है. इन चारों situations में न्यूटन की first law obey हो रही है. ये वाली situation क्या थी? There was this floating wood. This was a floating wood. उसके बाद there was this balloon held stationary. Zainab, do you have a class right after my? No. अच्छा, तो हो सकता है मैं 5-10 मिनट में भी ऊपर ले जाऊं. Balloon held stationary, right? इन सब एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि the body remains at rest. The body remains at rest. अच्छा, अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, when the body is moving with constant speed. Body is moving with constant speed. ये देखिएगा, ये एक व्हीकल है, एक कार है, एंड इसके ऊपर यू कैन सी अ लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. अच्छा, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं ना, तो हम जरा इसको क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग. हॉरिजॉन्टल कौन सी फोर्स है, वर्टिकल कौन सी फोर्स है. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार को. दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स
That's called the engine thrust. What is this? Engine thrust. इसको forward force भी बोल सकते हैं, इसको driving force भी बोल सकते हैं. And there's this friction between the tires of the car and the road, and then this engine thrust acting forward. So ये जो दोनों forces हैं, they are equal. इसकी एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दी थी कि जब आप स्पीड अप करते हो, करते करते एक पॉइंट आता है कि आपकी स्पीड, आपकी जो इंजन की फॉरवर्ड फोर्स है और जो एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड एक्ट करती है, दे बिकम इक्वल. व्हेन दे बिकम इक्वल तो क्या होगा? जितनी स्पीड ये कार गेन कर सकता था उसने कर ली, राइट? मजीद ये स्पीड गेन नहीं करेगा, मजीद ये स्पीड गेन नहीं करेगा, राइट? ठीक है. सो जब ये मजीद स्पीड गेन नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. एंड दैट्स वेयर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कम्स इनटू प्ले. इसी तरीके पे ये वर्टिकली भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना? सो फोर्सेस आर अगेन बैलेंस्ड, इट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. एक और एग्जांपल देखिएगा, ये बाइसिकल है. अब मैंने आपको ये तो बता दिया था कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं प्रीवियसली, लेकिन कौन कौन सी फोर्सेस, कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, ये बात मैंने आपसे पहले नहीं की थी, राइट? तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं अभी. ये देखिएगा नाउ, अगर मैं देखूं ये बाइसिकल जो मूव हो रहा है, it's moving with a constant speed once again. It's moving with a constant speed. Steady speed मतलब constant speed. ठीक है. एक तो इसकी ड्राइविंग फोर्स है फ्रॉम पैडलिंग, ये साइकिल को पैडल कर रहा है, तो कौन सी फोर्स मिल रही है? व्हाट इज दिस फोर्स कॉल्ड? हानिया, जैनब, लिंथा, Driving अब्दुल्ला. force. ड्राइविंग फोर्स. ठीक है. एंड एज ही मूव्स अलोंग, तो मुझे जैनब बताओ बैकवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है? Air resistance. एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज वेल. हाँ हानिया, ये फ्रिक्शन किधर होगी? Where would the friction be acting? Backward. Backward, right? But can you tell me the point, the place in this picture where the friction will be acting? Left It will, side. it will be acting between tires and the road. Tires and the road, right? ठीक है. So again आपके पास जो driving force है, it's equal to the backward force. Hence this cyclist is moving with a steady speed, with a constant speed. I hope यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी. Newton's first law when objects are at rest, Newton's first law when objects are moving with constant speed. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें? No. अब No, एक sir. इम्पॉर्टेंट चीज, और वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज है फ्री बॉडी डायग्राम्स. क्या ये पॉसिबल है कि हम हर वक्त पूरे पूरे पिक्चर्स बनाएं, बाइसिकल की, व्हीकल की, बलून की, फ्लोटिंग वुड की? Is that sensible? No. So what should we do? We should learn free body diagrams. How do they work? Free body diagrams. Wait, so we will have to draw on the exams, like diagrams about it? Exactly. Free body diagrams exam में draw करने को आती हैं. ठीक है? Free body diagrams. अब free body diagrams बनानी है. Free body diagram सबसे पहले tug of war की बनानी है. किसकी? Tug of war की free body diagram बनानी है. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ. Number 1, tug of war. Tug of war की जब मैं बात Can करता I हूँ, go drink water? Yep. Yes, sure. So tug of war की अगर मैं बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए पता है क्या करना होता है मुझे? मुझे सिंपली एक डॉट बनाना होता है. ठीक है, सिंपली एक डॉट बनाना होता है. एंड
This dot is the object on which the forces are acting. This dot is the object on which the forces are acting. So हमारे पास tug of war में what is the object where the forces are acting? It's the rope, right? Where are the forces acting? One force is acting to the right. Okay. And the other force is acting to the left. Left. All right. Let's name the team right, the red team, and team left, the blue team. Okay. So there is a force on the left, there's a force on the right due to each of the teams. This is the simplest diagram, free body diagram of tug of war. Okay. इसमें आपके पास So we aren't gonna draw like people pulling it. exactly. So this tug of war, this is the rope. हानिया ये वाली बात समझ आ गई बच्चे? Yes. So this is the rope. ठीक है? All right. अब example number 2, जिसमें हमारे पास ये सूटकेस है. तो मैं क्या करूंगा? I'll make a simple dot. ठीक है? ये हो गया मेरा सूटकेस. How many Oh, I forces also are? have another question. Am I supposed to draw the diagram with a pencil in the exam, like with graphs and stuff like that? Or am I supposed to use a pen? It's not necessary to draw it with a pencil. You can use a pen. For graphs, it's recommended that you use a pencil because when, God forbid, if you get something wrong and you have to erase it, then the graph becomes messy. You have no other option to write it somewhere, make it somewhere else. All right. So now, please, Hania, would you help me draw a free body diagram of the suitcase? कितनी forces लग रही हैं बेटा? 2 forces. Forces. And कौन सी force है? Upward force कौन सी है हानिया? The pulling Who's pulling? Arm pulling. or pulling. And what is the other one? Weight. Weight acting downward. Weight acting down. And what is this dot? This is the suitcase, right? Okay. So this is the free body diagram for the suitcase. Any problem? Any confusion? No. Okay. Free body diagram for this floating wood. What it would be? Floating wood. यहाँ free body diagram कैसे बनेगी? Simply Oh, this dot representing the wood. yeah, and then a line representing water. And then the upthrust from water. Hania, सही बना रहा हूँ? Yes, sir. Aaron's gonna draw the water. Come again? Bjorn's gonna draw like the water. No, अब यही तो free body. Simplest view of this diagram. Just need to show it with an arrow. All right. And then this weight acting downward. Right? And then this is what? This is the wooden block. Right? Okay. Free body diagram. यहाँ कैसे बनेगी? यहाँ दो free body diagrams बनेगी. एक आपके पास बनेगी balloon. Right? This is the balloon.
And what are the forces acting on it? What are the forces acting on it? It's the tension in the string. What is the force acting over here? Come on, कहाँ चले गए लोग? Am I audible? Yeah, you are audible. All right. Helium is- gas, I think. Upthrust from helium gas. Yeah. Upthrust from the air. Right? Upthrust from the air. I thought, oh, never mind. Right? Understand? हानिया, बेटे ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, हानिया आप मुझे एक हेल्प करो, मुझे ये बताओ कि इस सी डायग्राम में दूसरी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी? What would be the object? The man? हाँ हानिया बताओ बेटा, ऑब्जेक्ट कौन होगा? याद भी, right? What are the forces acting? Yeah. Can you please help me with the forces now, Hania, at least? The weight of the man, right? The gravity, The gravitational force gravitational or the force weight, and the contact force. and contact force from the earth. Right? Any problem, any confusion? No, it's fine, I got it. None. Let's make a free We body can diagram. also write reaction force for the contact Yes. force, right? Yes, normal reaction. All right. This one, who can help me with this diagram? This is the car. Then we draw arrow down, or we can just write car by writing it the car, and then we can just write weight by drawing a diagram down, and then contact Okay. force by अब मेरे drawing an पास arrow up. मुझे वधा ने एक बताया वेट. नाउ सब मुझे एक एक बताओगे. अपवर्ड फोर्स बताओ मुझे क्या लगेगी? जैनब, Contact force. Normal contact. नॉर्मल रिएक्शन. Normal. नॉर्मल फोर्स. ठीक है. एक एक अब मुझे इसने भी बता दिया, अब्दुल्ला ने भी, और आई थिंक हानिया आपने भी बताया. वर यू सेइंग Yes, नॉर्मल sir. फोर्स? शाबाश. अच्छा जैनब, अब मुझे बताओ बाकी फोर्सेस क्या होंगी? जस्ट वन मोर फोर्स, टेल मी वन मोर फोर्स. Friction ओके, वेयर? on the right side. And Zainab, sorry, Linta. Zainab, it was Zainab, right? Yes. Linta, आखिरी वाला बताओ. I think air resistance. Just look at the diagram. वहाँ कौन सी forces है? Okay, चलो air resistance आपने बता दिया. Good, good, ठीक है, ठीक है. One minute. Air resistance आपने बता दिया. That's right. तो air resistance भी कहाँ act करेगी? Backward act करेगी ना, opposite to the motion. यहाँ mention नहीं है वैसे, given नहीं है. लेकिन अगर air resistance given होती तो it would be acting backward, right? And yes, this is right. Engine thrust, forward force. Engine thrust or forward force, right? And now comes this bicycle. All right, so how many forces are acting here? Three. Tell me one by one. Hania, पहले आप बताओ. The driving force Which direction? forward.
to the right in this case, right? Okay, Zainab next. The air resistance. Forward on the left side. All right, Yeah. air resistance. Okay, Linta, एक और force बताओ जो यहाँ possibly act कर सकती है. Weight. Which direction? Downward. Can't there be another one as well? For example, normal contact, that could also Excellent. be. So I hope you have understood the free body diagrams. Yes. Yeah, it's clear. It's not just what I want you to reply yes, but मुझे सही बताओ वाकई समझ आया या मुझे कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आप लोगों को आज के लेक्चर में समझ नहीं आई या that was difficult to understand. The normal contact force is always upward. Not necessarily. You are sitting on a chair, it's acting opposite to your weight, upward. But if you look at the back, the chair is exerting a force on your back. That's the normal contact force. If you lean against a wall, then the wall is acting a forward force on your back. That is the normal contact force. So it Okay. is always acting at right angles to the surface. The normal contact force acts at right angles to the surface. Okay. Any problem? Any confusion? No, sir. Okay. So हमने ये examples भी discuss कर ली. हमने न्यूटन का first law भी लिखवा दिया. And just before I close this class, मुझे दो चीजें बतानी है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. And what is inertia? Inertia is the property of a mass to resist change. To resist change. अब इसकी एग्जांपल मैं कल मजीद डिस्कस करूंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बस इतना अभी के लिए याद रखना कि inertia is the property of a mass to resist change. Inertia पे मैं कल बात करूंगा. एक बात. दूसरी बात कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is only applicable when resultant force is zero. When resultant force is, बोलो बेटा, 0. zero. Zero. The point where the resultant force becomes anything other than zero, let it be 1 Newton, let it be 0.5 Newton, let it be 0.1 Newton. जब resultant force zero नहीं होगी तो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ applicable नहीं होगा. Then your second law of Newton will come into play, right? And that is when you apply a force to some object, the more you apply the force, the more will it accelerate. ठीक है, तो उसको फिर मैं इंशाल्लाह ताला इनर्शिया से स्टार्ट करूंगा और फिर सेकंड लॉ पे जाऊंगा. थर्ड लॉ भी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. एंड होपफुली हम थर्ड लॉ कल पूरा कर लें. उसमें थोड़ी सी डिटेल्स हैं एंड फ्रिक्शन की थोड़ी सी और डिटेल्स हैं. तो हम एक दो क्लासेस में ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म कर देंगे. ठीक है? Can we do possible questions after that? Yes, we will do. All right. Right? Okay, so I hope everything was very clear. कोई मसला नहीं था आज की क्लास में. It was clear. Yeah. चलो good. So see you in the next class. Until then, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.